Let's begin with Almighty's name, who's the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, viewers. Hope you all are fine. I'm today beginning another series which is going to be very beneficial for you. Yes, this is common error series. The errors that we make generally and by mistake in English language. It can have several sorts of errors pertaining, you can say, preposition, verb, article, and so on, right? So, one by one, we are going to handle all these errors. I try my best to tell you how you can remove maximum errors. So, this is your lesson number one. See, viewers, this is how we can make errors unknowingly and without knowing what can be the wrong meaning of the sentence if we make a wrong one. Okay, so this is C. I go with the car. With with the car is something completely wrong because it means going side by side, hand in hand. Okay, whereas the right one is I go by car. By is the correct preposition. So इस तरह से देखें कि एक गलत preposition इसका इस्तेमाल से हम बहुत बड़ी error कर सकते हैं और sentence का meaning change हो जाता है, right? So first of all, in this series we are going to study the errors of prepositions, and out of prepositions this is the first lesson. I'll give you many lessons on prepositions as well, so that there will be high chances that maximum errors will be removed. So the purpose of today's lesson is to make you aware of the usage of prepositions correctly, right? So these are some of the prepositions in front of you. This is to refresh the knowledge कि वो कौन से words हैं जिनके साथ आज हम deal करने जा रहे हैं, right? So today's lesson is in the form of an activity, क्योंकि आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आपके सामने एक्टिविटीज़ और एग्जांपल्स होंगी उतना ही आपके लिए ईजीली पॉसिबल होगा इसको इम्प्रूव करना, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट. यू हैव टू गेस के विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द पाउच फेल डैश द बिन. इज़ इट इन और इन टू? वॉट डू यू थिंक व्यूअर्स? इन टू, क्योंकि इन टू इज़ यूज्ड फॉर गोइंग इनसाइड समथिंग, right? Going deep into. The bus will arrive dash 2 minutes. Within or in? Definitely within. Time के लिए you should use within. I don't care dash your opinion. For or about? About. क्योंकि care for is mostly used for the persons or you can say the animate things, not for ideas. आइडियाज़ के लिए आप अबाउट यूज़ करेंगे. आई गो टू स्कूल डैश बस. इन द बस और बाय बस? बाय बस इट शुड बी, राइट? कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं कि जो कि जिनकी जगह फिक्स होती है. गोइंग बाय बस इज़ समथिंग विच इज़ फिक्स, तो आपको इसको याद रखना है इसके इस्तेमाल को. दे एग्रीड डैश आवर डिमांड्स विद के टू. It is to. Agree with is mostly used for persons, right viewers? और agree to चीज़ों के लिए, ideas के लिए. I have been waiting dash 2 hours. From or for? Definitely it should be for, क्योंकि you must know that in all the perfect continuous tenses, whether they are present, past or future, there are two sorts of prepositions are used for telling the time. एक होता है since और एक है for, right? So there is only one option left here, that is for. So we have to use here for. For tenses के according unfixed time के लिए होता है viewers, और since जो है fixed time के लिए होता है. This will be told by me and I will explain it in detail whenever we will be doing the tenses. So don't worry. Next, number 7, it is let me take you dash the market. In the market or to the market? To. To इस सेंस में यूज़ होता है viewers, going to the market, because someone is leading someone towards, okay? That is why in यहाँ पे suitable हरगिज़ भी नहीं है.
Number 8, take dash your shoes, please. Take out or take off? Definitely it should be take off. Taking off means removing. He was accused dash cheating for or of. Accused viewers किसी पे इल्ज़ाम लगाना, मुर्तकिब ठहराना किसी को, तो इसके साथ हमेशा क्राइम के लिए ऑफ होगा, राइट. सो रिमेंबर दिस कि एक्यूज़ के साथ हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज़ नंबर 10, लेट अस गेट डैश द बस. ऑन और इनटू. इट इज़ ऑन मीन्स जैसे हम कहते हैं राइड ऑन, गेटिंग ऑन बोर्ड, उसी तरह से. आई वेक अ लॉट डैश द नाइट. इन और एट. इन. वाई? बिकॉज इट इज़ शोइंग दैट ड्यूरिंग द होल नाइट. ओके, सो इसलिए हम यहाँ पे इन के ऑप्शन को चूज़ करेंगे. व्यूअर्स, अब जो इसके बाद सेंटेंसेस आ रहे हैं इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, सो दैट यू योर सेल्फ मे ट्राई टू थिंक ओवर विच preposition इज़ appropriate over here. आप खुद सोचें कि इस ब्लैंक में देर आर हंड्रेड्स ऑफ prepositions, तो आप सोचेंगे इस यहाँ पे कौन सी सूटेबल है, राइट. द स्टूडेंट्स मार्च्ड डैश द सेंटर ऑफ द स्टेडियम. व्हाट डू यू थिंक व्यूअर्स, यहाँ पे क्या आ सकता है विच इज़ सूटेबल टू वर्ड्स. ओके. He put his arms dash the pole to see if his opposite fingers touched. Arms dash the pole. Around. Okay. इर्द गिर्द. There has been a curfew in our area dash 3 weeks now. जैसे मैंने आपको अभी कुछ स्लाइड्स पहले बताया, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जहाँ पे हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन और विल शेल हैव बिन यूज़ होगा, वहाँ सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है. सो ये भी आपने चीज़ मेमोराइज़ कर लेनी है और यहाँ पे सिंस और फॉर में से आप यूज़ करेंगे. तो चूँकि 3 weeks इज़ नॉट अ फिक्स टाइम, इसलिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, राइट. I will apply dash a job dash I finish my training. I will apply dash a job. What do you think, viewers? For a job dash I finish my training. After I finish my training, right? Number 16, we are planning dash leave dash the airport dash an hour. What do you think? We are planning dash leave dash the airport dash an hour. We are planning to leave for the airport in an hour, right? So this is all meant for your practice. The juggler tied the rope dash his waist. Rope कहाँ पे tie की जाती है? It is around. You know juggler? Juggler is a person who performs different feats, जो करतब दिखाता है. We can say madari in Urdu. Okay. Distribute the sweets dash the audience. Among or between. Remember viewers, between is used for the division for two persons or places or things, whatever it is. And if the persons are more, you have to use among. Okay. सो ऑडियंस के लिए आपको क्या लगता है, बिटवीन बेहतर है या अमंग? इट इज़ डेफिनेटली अमंग. ओके. सेकेंड लास्ट इज आई फेल डैश द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट डैश द राइट हैंड. आई फेल डाउन द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट इन द राइट हैंड. ओके. सो गेटिंग हर्ट इज ऑलवेज इन एनीवेयर. ओके. डोंट लाफ डैश द beggars. Laughing is always at. Remember. सो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ एक फ़िक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है. किसी पे हंसना, किसी का मजाक उड़ाना इज़ ऑलवेज लॉफिंग एट. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट सम प्रपोजिशंस आर रिटन इन दिस वे, कंपाउंड प्रपोजिशंस, तो उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. जैसे कि इनटू का मीनिंग क्या होता है? शोइंग मोशन टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनी प्लेस एंड इट आंसर्स वेयर. For example, the example is we drove into the city, right? And if it is used in this way in a splitted form,
तो इसका मीनिंग होगा इन ऑर्डर टू, राइट? द कस्टमर केम इन, अ कस्टमर केम इन टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, राइट? सो इस तरह से कंपाउंड prepositions का इस्तेमाल भी जहन में रखिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू आर गोइंग टू enjoy the video and you will take advantage out of it. You will practice the lesson also because practice will be making you perfect. If you like, try to subscribe the channel and get notified. That's all. Take care of yourself till the very next lesson. Allah Hafiz.